students, let's continue with the last part of practice set 3.6. The last part is a very difficult one, and in today's lecture I have kept only 3 sums to solve. But these 3 sums are challenging, they are not simple. Now when you look at the question, you will find that the sum is a bit different, because here there are 4 brackets given, and now in these 4 brackets nothing is common. So what to do? You have to take the pairs. तुम्हें 4 ब्रैकेट में से दो का पेयर करना है, जोड़ी करना है. नाउ जोड़ी कैसे करेंगे? See, I'll give you a trick. +2 + 3 is 5. 8 - 3 is 5. Once again, +2 + 3 is 5 and 8 - 3 is 5. That means दोनों का एडिशन सेम है, तो हम इन दोनों का जोड़ी ले सकते हैं. That means I can multiply y + 2 by y + 3 and I can multiply y - 3 by y + 8 plus 56 will remain as it is. Now I multiply these two brackets, y + 3 plus 2 y + 3. So y + 3 is repeated twice. First bracket I have split. Similarly here also y + 8. Sorry, don't put a plus sign here. Put a bracket here because this is multiplication. Now put a bracket here. Y + 8 minus 3y + 8 plus 56. समझ में आ रहा है मैंने ब्रैकेट क्यों रखा है? बिकॉज मैं 2 बार ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं and I'll get one answer, one bracket. I'll multiply these 2 brackets and I'll get one bracket. समझ में आ रहा है? Because all are multiplication. Clear है? So here we will get y² plus 3y plus 2y plus 6. Similarly here you will get y² plus 8y minus 3y minus 24 plus 56. So I'll get y² plus 5y plus 6. This is the first bracket what I am getting. This bracket has to multiply by this bracket, that is y² plus 5y minus 24 plus 56. Okay, now we got 2 brackets, but in these 2 brackets there is something in common, y² plus 5y. So I'll write let y² plus 5y be m. अरे समझ में आ रहा है ना? मेरा intention, what was my intention in taking these 2 brackets and these 2 brackets? I wanted to get 2 brackets here and I wanted to get a like term, and I got it. See, y² plus 5y and y² plus 5y is common. It is repeated twice. So take y² plus 5y as m. So instead of writing y² plus 5y, I will write m plus 6, and here I will write m minus 24 plus 56. Now multiply these 2 brackets. That will be m minus 24 plus 6 m minus 24 plus 56. So I'll get m² minus 24m plus 6m minus 6 into 24 is 144. 144 plus 56. So I'll get m² minus 18m minus 144 minus 56 is 144 minus 56 is 144 minus 44 is 100. So 100 minus, that is 612. 100 minus 12 is 88. Is this clear? So I got m² minus 18m plus 88. So these are 3 terms. Trinomial है ना? ये ट्राइनोमियल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे. याद है? फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? याद है? सो 88 को स्प्लिट करना है. आई मस्ट गेट 18. सो minus 88, that is first term multiplied by the last term. So 1 into 88 is minus 88. 88 कौन से टेबल में आता है? 4 में जाता है, 2 में जाता है, 11 में जाता है, 22 में जाता है. तो 22 4 is 88. I want minus 18. I want minus 18. So minus 22 plus 4 will be minus 18. Condition number 2,
कंडीशन नंबर 1. So 88 must मतलब 22 4 is the 88. Plus into minus is minus 88. Minus 22 plus 4 is minus 18. So I got minus 18. So m square minus 22m plus 4m minus 88. Common. What is common? Common is m minus 22 plus 4 m minus 22 is equal to 0. m minus 22 m plus 4 is equal to 0. अरे बराबर है, सॉरी इज इक्वल टू 0 कहां से लिख लो, 10th स्टैंडर्ड में आता है वो इक्वेशन. सो आई गॉट m minus 22 m plus 4. But is this the final answer? Are these factors final answer? No, these are not final answer because we are not supposed to find the answer, the factors in terms of m. The question was given in terms of y, so I have to write what? Resubstituting what? m by y square plus 5y. जहां पर m है वहां पर मैं क्या लिखूंगा? y square plus 5y. So I will get y square plus 5y minus 22, y square plus 5y plus 4. Okay. m minus 22. Don't write m. Instead of m write y square plus 5y minus 22. Instead of m write y square plus 5y plus 4. अरे बराबर है. Now 22 को स्प्लिट करो, आंसर आना चाहिए 5 minus 22. 22 जाता है एक ही टेबल में. 11 2 जा 22 और 22 1 जा. 22 1 जा करूंगा तो 22 plus 1 23, 22 minus 1 is 21. You want 5. और 11 2 जा करूंगा तो 11 plus 2 is 13, 11 minus 2 is 9. 5 आता है क्या? नहीं आता है. That means इसको फैक्टर कर नहीं सकते. That will remain as it is. It will remain as it is. बट क्या इसको फैक्टर कर सकते हैं क्या? 4 को स्प्लिट करो, आंसर आना चाहिए 5. 4 1 जा 4 plus 4 plus 1, 4 plus 1 is 5 आता है. That means y square plus 4y plus 1y plus 4. 5 को स्प्लिट कर रहा हूँ. फर्स्ट टर्म इज एज इट इज, लास्ट टर्म इज एज इट इज, मिडिल टर्म को स्प्लिट. सो दिस विल रिमेन एज इट इज. ये तो उसको चेंज करना ही नहीं, ये लास्ट तक ऐसे ही चलेगा. बराबर ना? बट इसका आंसर y is common, y plus 4 plus 1 is common, y plus 4. Y plus 4 is repeated twice, so y plus 4 and then y plus 1. So this is the final answer. Hope this is clear. The second last question of today's video, y square plus 5y, y square plus 5y. इसके पहले वाला question was a bit challenging, but this is a simple question because here clearly y square plus 5y and y square plus 5 are the common terms are same. So I can directly write as let y square plus 5y be m. So I'll get m instead of this and then m minus 2 minus 24. I'll get m square minus 2m minus 24. So minus 24, condition number 1, first term into last term, and condition number 2 is minus 2. 24 is 6 4s are 24 minus 6 plus 4. 6 4s are 24 minus into plus minus. 6 and 4 is 2 minus 2. Done. Therefore m square minus 6m plus 4m minus 24. Kuman is m minus 6 plus 4 m minus 6. So I'll get m minus 6 m plus 4. This is the final answer? No, this is not the final answer because we are supposed to find the answer in terms of y. So we will do what? Resubstituting. I will write resubstituting m by y square plus 5y. So I get what? Y square plus 5y minus 6 y square plus 5y plus 4. Okay, now how many sums are there? 2 sums are there. अभी या तो उसको अलग से सॉल्व कर दो and write the answer directly, और यहाँ पे ही सबको सॉल्व करो. बट यहाँ पे ही सॉल्व करूंगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना. सो आई विल
solve here and I will write the answer here. इसका आंसर आएगा -3 + 2. इसका आंसर आएगा +4 + 1. See, this is the direct method. I can do it directly. I can find the factors directly. मैं directly factors find कर सकता हूँ. Clear है? But ये problematic number है. 6 को split करना है, आंसर आना चाहिए 5. If you take -3 + 2, चलो एक बार कर लेते हैं. y² + 5y - 6. I'll show you the direct method. This is the first question. I'm solving the first question. How to solve it? First number into first number. Your answer is -6. This is condition number 1. Then do tangadi, condition is 5. Now -3 + 2. 3 2s is 6 minus और प्लस करके -5 बराबर ना. आता है क्या 5? नहीं आता है. तुम लोग बोलेंगे सर इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो. अब देखो -3 + 2 -1 आता है क्या आंसर 5? नहीं आता है 5. दैट मींस ये फैक्टर्स रॉन्ग है. मतलब ये फैक्टर्स रॉन्ग है. क्लियर है क्या? क्योंकि 6 और 5 वाले सम में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा ही. इट विल बी 6 1s are 6 -6 sorry +6 -1. 6 - 1 is 5. 6 1s is 6 plus into minus is minus. So answer is correct answer is +6 and -1. जो करेक्ट आंसर आया ना उसके आगे लगा दो +6 -1. That's it. इतना इजी. डायरेक्ट आंसर. अरे समझा क्या? बट डायरेक्ट आंसर बहुत सारे टीचर्स मना करेंगे, बोलेंगे हाउ यू गॉट द आंसर, यू कॉपीड, सब नाटक करेंगे. उससे अच्छा यू सॉल्व y² + 6y - 1y - 6. ये फैक्टर्स है. y वेरिएबल है. y + 6 - 1 y + 6. So y + 6 and y - 1. So this is the answer. देखो इधर आया है. बराबर है. सिमिलरली नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं. y² + 5y + 4. इसको सॉल्व करते हैं. सेकंड को सॉल्व करते हैं. 4 को स्प्लिट करो, आंसर आना चाहिए 5. 4 1s are 4. आंसर आएगा 5. बराबर ना. +4 + 1. So y² + 4y + 1y + 4. Common is y + 4 + 1 y + 4. So answer is y + 4 y + 1. देखो y + 4 y + 1. Hope this is clear. अरे बराबर. This is the first sum, second sum, third sum. तीनों सम मिला के एक सम दिया है. Easy sum, easy है. This is the last sum of today's video and it is similar to the first sum of today's video. That means it is a bit confusing because when you look at the question, you will find that it is not normal type of question, it is an abnormal type of question. Now how to solve such type of questions? 4 brackets, x - 3, x - 4, x - 4 is repeated twice. So I wrote it 2 times. X - 5 - 6. Now 1 2 3 4 4 ब्रैकेट. याद है मैंने सिखाया था जोड़ियां लगाओ. जोड़ियां. -3 - 5 is -8. -4 - 4 is -8. That means first bracket will match to the last one and the second will be the third one. So I'll write x - 3, x - 5, x x - 4, x - 4 -6. So multiply the brackets. X - 5 - 3 x - 5. This is the first bracket multiplication and the second is x - 4 - 4 x - 4 -6. So I'll get x into x is x² -5x -3x -3 into -5 is +15. Here you will get x² -4x -4x plus 4 4 is 16 -6. Okay. So I'll get x² -8x plus 15 and here I'll get x² -8x plus 16 -6. Okay. Now x² -8x is common. I will write let
x square minus 8x be m. So I'll get m plus 15 m plus 16 minus 6. Now how many brackets are there? 2 brackets. Now you have to multiply the 2 brackets. I'll get m plus 16 plus 15 m plus 16 minus 6 m square plus 16m plus 15m plus 15 into 16 is 16, 15 is 240 minus 6. So I'll get m square plus 16m. 15, 16 is 240 na? 15, 6 is 90, 0, 15, 9, 24. Perfect. M square plus 16 plus 15 is 31m. 240 minus 6 is 234. So these are 3 terms. So you have to find the factors. That is m square plus 31m plus 234. 234. First number multiplied by first number. Condition 1. याद है ना? दो तंगड़ी. Total 31. Okay. Now 234 कौन से टेबल में आता है? 234 आता है 2 के टेबल में. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 7 जा. 13 के टेबल पे भी आएगा. 13 1 जा 13 104. 13 8 जा 104. So 13 plus 18 31 आता है क्या? Yes, perfect. That means 13 into 18 is 234. So m square plus 13m plus 18m plus 234. Kuman is m plus 13 plus 18 m plus 13. So m plus 13 and m plus 18 is the answer. But is this the final answer? No, because they have given the variable x. You cannot find the answer in terms of m. So what to do? Resubstituting m by x square minus 8x. So I'll get x square minus 8x plus 13, x square minus 8x plus 18. Now there are 2 sums. वो एक सम पूरा हो गया. अब ये सम ने 2 छोटे सम्स को जन्म दिया है. चलो पहला जन्म देखते हैं. 13 को स्प्लिट करते हैं. आंसर आना चाहिए 8. 13 1 जा 13. और कोई टेबल ही नहीं है. 13 plus 1 is 14. 13 minus 1 is 12. 8 आता है क्या? नहीं आता है. Then that means this cannot be solved. बराबर है. अभी इसको चेक करते हैं. 18 को फोड़ो प्लस 18 को फोड़ो. आंसर आना चाहिए 8. 18 is 9 2 जा 18. 9 plus 2 is 11. 9 minus 2 is 7. नहीं. 18 is 3 6 जा 18. 3 plus 6 is 9. 6 minus 3 is 3. 8 आता है क्या? नहीं. And बस 18 1 जा 18. 18 plus 1 is 18. 18 minus 1 is 17. 8 आता है क्या? नहीं. That means you cannot solve these 2 sums. भगवान करेंगे सॉल्व करने का नौबत ही नहीं है, बिकॉज़ लंबा हो जाता है ना. सॉल्व करना ही नहीं है. That means यहाँ पे ही सम खत्म हो जाता है. Is this clear? Okay. Bye bye.